क्या है ये? How price is determined under perfect competition. Market. Perfect market or perfect competition. How it means how price of a product. अगर परफेक्ट मार्केट में एक प्रोडक्ट तैयार हो गया, फॉर एग्जांपल फर्मर्स हैव प्रोड्यूस्ड गुड एक्स, अब हमें देखना है कि इस एक्स का प्राइस क्या डिटरमाइन होगा परफेक्ट मार्केट में। अगर हमने परफेक्ट कंपटीशन में इसको छोड़ा है बेचने के लिए, व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ दिस प्रोडक्ट? कैन यू टेल? Price. जी, हाउ प्राइस इज डिटरमाइंड इन द परफेक्ट मार्केट। एक प्रोडक्ट का प्राइस किस तरह डिटरमाइन होता है, किसमें फिक्स होता है? आपने भी, दूसरे ने भी, तीसरे ने भी, चौथे ने भी, देयर आर अनलिमिटेड sellers, they have produced X, everyone has produced X, though everyone has put this X in the perfect market for sale. How this X, price of X is determined in this market when the market is perfect market? कैसे इसका प्राइस फिक्स होगा? Any idea? No, sir. Basically, price fixation have different contexts in different market situations. How to fix the price or determine the price of a product in different market situations? There are different narratives. There are different things responsible. In monopoly, when the person is monopoly, he or she is producing a product, he may sell according to the market conditions, keeping cost into consideration, demand, supply, etc. For an oligopolist or for a duopolist, the price fixation is a different thing there. But in perfect competition, the price, it is a thumb rule here, it is a determined rule here, fixed rule here, that the price of a product is determined by the forces of demand and supply. These two forces determine the price of a product in the perfect market. So we write down, in perfect market or in perfect competition, the price of a product, the price of a Product. or price of a good is determined by the forces of Supply. by the forces of demand and supply. Demand and supply. इस चीज की डिमांड कितनी है और इस चीज की सप्लाई कितनी है. These two forces determine or fix the price of the product. These are called market forces. इनको हम कहते हैं, these are two forces which work in the market. They are called market forces. So we can say the market forces determine or fix the price of a product, in the perfect market, Market. Now the question is, how these market forces determine? ये कैसे काम करते हैं, ये कैसे determine कर सकते हैं किसी चीज का price in the perfect market? The question is, the simple answer, the answer to this question is very simple, that the price is determined, the price of a good is determined at the point, or such price is determined for this product when quantity demand is equal to
क्वांटिटी सप्लाई। Quantity supply. जिस प्राइस पे क्वांटिटी डिमांड बराबर होगी क्वांटिटी सप्लाई, तो दैट प्राइस इज डिटरमाइंड इन द परफेक्ट Competition. कॉम्पेक्शन। समझ आ गया? Yes, sir. अगर फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट, आई कैन गिव यू एन एग्जांपल, अगर कोई प्रोडक्ट है, ये मार्केट में आ गया, ये मार्केट में आ Yes, गया, sir. फॉर एग्जांपल ये नजर आता है जो मैंने बनाया है, प्राइस, Yes, sir. क्वांटिटी डिमांड एंड क्वांटिटी सप्लाई। Supply. अगर एक प्रोडक्ट है, इसका प्राइस फिक्स हो गया 10 रुपया, क्या हो गया Yes, प्राइस? sir. 10 रुपया, और उसकी डिमांड फॉर एग्जांपल 200 है, बट द सप्लाई इज ओनली 100। प्राइस कितना है? 10. 10 है। डिमांड कितनी है? 200. सप्लाई कितनी है? 100. प्राइस, प्रोडक्ट को छोड़ दिया गया मार्केट में, और मार्केट ने डिसाइड किया है प्राइस 10 रुपया। जब लोग Yes, लेने sir. के लिए आ गए, 200 आदमी आ गए लेने के लिए, लेकिन 100 ही प्रोडक्ट Supply वहां 100 kg. हाँ, इसका मतलब है कि 100 आदमियों को वापस जाना पड़ेगा विदाउट बाइंग द प्रोडक्ट, विदाउट बाइंग Yes, द sir. प्रोडक्ट। Product. So naturally in the market the situation arises that here quantity demand is more than quantity supply. Yes, sir. क्वांटिटी डिमांड यहाँ ज्यादा है एज कंपेयर टू क्वांटिटी सप्लाई। फातिमा, आपको समझ आता है मैं क्या बताता हूँ? यस सर। क्वांटिटी डिमांड ज्यादा है, क्वांटिटी सप्लाई कम है। कम है। जब लोग ज्यादा इसको मांग रहे हैं, इसकी मांग ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, नेचुरली जब डिमांड किसी चीज की ज्यादा होती है तो उसका प्राइस बढ़ जाता है। यस सर। है ना? Yes, sir. अगर कोई चीज आ गया मार्केट में तो लोग ज्यादा इसको ढूंढ रहे हैं, लेकिन सप्लाई उसकी कम है, तो मार्केट देखेगा कि इसकी डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, द प्राइस, तो प्राइस इंक्रीज होगा। जब प्राइस राइज हो गया, जब प्राइस राइज हो गया, राइज हो गया, डिमांड कम हो जाएगी। डिमांड क्या हो जाएगी? कम। कम। फॉर एग्जांपल इट गोज टू 150, ठीक है? यस सप्लाई सर। को क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगी। बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। यस सर। प्राइस, यस सर, प्राइस होगा ना इंक्रीज। प्राइस इंक्रीज है, प्राइस जब इंक्रीज हो गया तो सप्लाई तो इनमें डायरेक्ट इंक्रीज हो रिलेशन है। जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पॉइंट बनता है, 100 ही सप्लाई थी, अब आप बताते हो सप्लाई इंक्रीज हो गई। ये सप्लाई क्यों इंक्रीज हो गई? इसका वजह क्या हो गया? ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस। ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस। इंक्रीज इन प्राइस है, लेकिन बनाया किसने? ये जो इंक्रीज सप्लाई हो गई, ये कैसे हो गया? ये प्राइस इंक्रीज से हो गया, लेकिन कोई न कोई नया आदमी आया ना, नए लोग आए ना। यस सर, इंक्रीज इन फर्म। हाँ, इंक्रीज इन फर्म्स। बिकॉज यही होता है, अगर ये मार्केट है, यहाँ ये गुथम गुथा चल रहा है, डिमांड और सप्लाई के दरमियान लड़ाई चल रही है, प्राइस वॉर यहाँ चल रहा है। बाहर कुछ फर्म्स बैठी हुई थी, बाहर फर्म्स बैठी हुई थी, वो देख रहे थे कि 10 प्राइस पे वो काम नहीं कर सकते हैं मार्केट में, उनको प्रॉफिट नहीं लग रहा है। जो फर्म्स ऑलरेडी हैं वो बनाते थे, उन्होंने वो सप्लाई करते थे 100 यूनिट्स, वो कैसे सस्टेन करते थे वो वही जाने। लेकिन जब प्राइस इंक्रीज हो गया, जो बाहर फर्म्स थे, मार्केट के बाहर जो फर्म्स हैं, वो अब आने लगे हैं, उनको लग रहा है कि अब 15 पे हमारा काम चलेगा, अब प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन ठीक हो गई हमारी, अब 15 प्राइस। तो ये सप्लाई बढ़ जाती है। दैट इज व्हाई वी से हियर लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई, ड्यू टू द फैक्ट दैट प्राइस राइज
price rise have invited new firms to enter the market. Market. Yes, price rise has invited new firms to the market because there is already a feature of perfect competition that there is free entry and exit of firms. वो अभी हमने Yes, पढ़ा. sir. Yes, sir. Firms can enter the market or firms can leave. अगर कोई firm Leave the market. Yes, sir. ये घाटा पड़ रहा Hold है, any. they can leave the market. They can leave the Yes, sir. वो मार्केट से बाहर भी जा सकते हैं. लेकिन अब जब प्राइस बढ़ गया तो जो ऑलरेडी फर्म्स बाहर थे उनको लगा कि हम इंटर हो जाएंगे मार्केट में और उन्होंने प्रोड्यूस करना शुरू किया और सप्लाई बढ़ गई. सप्लाई हो गई 150. अब इस प्राइस पे डिमांड भी इतनी है और सप्लाई भी इतनी है, तो यही प्राइस फिक्स होगा इन द परफेक्ट कंपैटिशन. Market. सो यही हमने पॉइंट लिखा. द प्राइस ऑफ ए गुड इज डिटरमाइंड एट ए पॉइंट और व्हेन क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए गुड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई. Supply. मींस दैट, इसका मतलब क्या है? इट मींस दैट व्हाटएवर इज सप्लाइड दैट इज डिमांडेड. दैट मींस Yes, sir. Yes, sir. is whatever is supplied, जो प्रोड्यूस होता है या सप्लाई होता है, that is that whatever is supplied or whatever is produced, that is supplied, that is demanded. Demand. Yes, Demanded. that is demanded, and there is no overproduction. वहां ओवर प्रोडक्शन नहीं है ना अंडर प्रोडक्शन है. neither this market is under production or overproduction. ठीक है? When quantity demand is equal to quantity supply. So this is Supply. some rule or natural rule for the perfect market that the price of a product is determined by the forces of demand and supply or by the market forces. It is determined or fixed when quantity demand is equal to quantity supply. Supply. Quantity demand is equal to quantity supply. ठीक है? ओके. Yes, sir. अब Yes, sir. अब हम दूसरा स्टेप इसका उठाएंगे इस क्वेश्चन का. Explain this price fixation or determination of price of perfect competition by schedule and diagram. Schedule or Yes, diagram sir. table, how to make it present it in the tabular form. Tabulation में कैसे हम इसको प्रूव कर सकते हैं. That is, हम ये कह सकते हैं the following table and diagram shows price determination under perfect competition. Under perfect competition. देखिए कैसे हम इसको सिंपली दिखा सकते हैं. हमारे पास प्राइस है, हमारे पास क्वांटिटी डिमांड है. जब कोई चीज मार्केट में आ गया, इसका प्राइस फिक्स हो गया, तो इसकी डिमांड भी Yes, बनेगी sir. और इसकी सप्लाई भी बनेगी. Supply. क्वांटिटी सप्लाई. फॉर एग्जाम्पल, हमने एक प्रोडक्ट बनाया, अरे एक फर्म ने प्रोडक्ट बनाया जो ऑपरेट करते हैं परफेक्ट मार्केट में, तो प्राइस मार्केट ने फिक्स किया 50 रुपीज. प्राइस इज 50 rupees. 50 rupees. For example, quantity demand is 70. Quantity demand is 70 70. and quantity supply is, for example, 30. So we can write down here, when price is rupees 50, the quantity demand in the market Is for the 70. product is 70 and quantity supply is 30. 30. That means here the quantity demand is more than quantity supply. Quantity supply. Supply. Is more than quantity supply, and that means there is scarcity of this product in the market.
there is scarcity. Scarcity. Scarcity, yeah. When quantity demand is more than quantity supply, prices are expected to increase. Price will rise. जब भी quantity demand ज्यादा है, quantity supply कम है, the Yes, demand sir. forces are strong, then supply forces, and when demand forces Price will rise. strong, the prices may go up. It's a natural process. हैं? जब Yes, sir. प्राइस बढ़ गए तो डिमांड कम हो जाएगी, कुछ कस्टमर भाग जाएंगे, उन्होंने देख लिया कि अब ये चीज महंगी हो गई. Some these buyers may leave the market and demand decreases as per law of demand. When price rises, demand falls. But supply, Yes, sir. Yes, sir. that means new firms will enter into the market. They will Market. Yes, sir. start increasing the production and supply to the market. That means, for example, this increases to 40. Again here, still here quantity demand is more than quantity supply. Supply. From 60 to 70. The price will go up from 60 to 70 because still quantity demand is more than quantity. What is more? Supply. This will still decrease. When price rises, quantity demand decreases and quantity supply increases. Here, this is the point where quantity demand is equal to quantity supply, and Quantity 70 price 70 will be the price fixation in the perfect market. ये प्राइस अब स्टेबल प्राइस बनेगा. परफेक्ट इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस. इसको कहते हैं हम इक्विलिब्रियम प्राइस. Equilibrium price. Equilibrium Yes, price. sir, ये क्वेश्चन आता है. What is equilibrium price? Equilibrium price is that price which is fixed in the perfect market, and Yes, at sir. this price, the quantity demand is equal to quantity supply. That means at equilibrium price, the market forces are equal. Market forces are equal. That is equilibrium. When forces are equal, that is equilibrium. That is equilibrium. So equilibrium price is the price fixed. Market forces are equal. Yes. अगर इससे ज्यादा प्राइस हो गया, फॉर एग्जांपल 80 प्राइस हो गया, तो डिमांड कम हो जाएगी, तो सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी. जब ये स्टेज आएगा, इस स्टेज पे डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, there is Yes, sir. overproduction. There is overproduction. Overproduction. है ना? Yes, sir. इसका मतलब है कुछ फर्मों का माल बिक ही नहीं रहा है. Yes, sir. 60 यहाँ सप्लाई है, only 40 is demand, there is gap of 20 is overproduction. उसको Yes, sir. प्राइस कम करना पड़ेगा. अगर सप्लाई ज्यादा हो, डिमांड कम हो, तो prices will decrease. It will again come Yes, sir. from 80 to 70. ये यहाँ से यहाँ जाएगा, ये इधर जाएगा, again जाएगा यहाँ. ठीक है? Yes, sir. For example, ओल्ड ट्रायल हम करेंगे. अगर 90 प्राइस हो गया तो 30 डिमांड बनेगी, ये 70 बनेगी. अगर और प्राइस बढ़ गया 20 बनेगी, तो ये 80 बनेगा. तो इनमें से कोई भी प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस नहीं है, इनमें से भी कोई प्राइस इक्विलिब्रियम. So any price less or more than 70 cannot be equilibrium price or price in the perfect market, because either demand is more than supply or supply is more than demand. If demand is more than supply, prices are expected to increase. If supply is more than demand, there is overproduction in the market. Some firms will leave the market. They will leave the market and supply will decrease and prices will come to the equilibrium level, that is 70 again and again. This is how this works. Now, how to explain this with the help of a diagram? हम ये बना सकते हैं, diagrammatically हम prove कर सकते हैं. This is OX shows quantity demand and quantity supply. OX shows quantity demand and quantity supply. OY shows price. अगर इन दो को हम रिलेशन बनाएंगे, this is law of demand.
बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड में अगर रिलेशन बनाएंगे ये लॉ ऑफ डिमांड बनता है, तो कर्व बनती है हमें डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, डीडी कर्व, डीडी इज डिमांड कर्व। अगर Yes, sir. प्राइस और सप्लाई को हम रिलेशन बनाएंगे तो सप्लाई कर्व बनती है दैट इज अपवर्ड स्लोपिंग कर्व ऐसा Yes, sir. है ना। Yes, sir. अगर मैं फॉर एग्जांपल प्राइस 50 उठाऊंगा, इफ आई टेक प्राइस 50 फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ प्राइस 50 उठाया, ये है ना प्राइस, फॉर एग्जांपल 50 प्राइस, Yes, sir. ये है 50 प्राइस, 50 पे डिमांड है ये 70। दिखाऊंगा ना आपको, ये है ना डिमांड लाइन, Yes, sir. ये है फॉर एग्जांपल डिमांड, ये है 70, ये है 70, सप्लाई क्या है 30, ये है सप्लाई 30, ठीक है। इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है, इक्विलिब्रियम है 70, दैट मींस 70। दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, पॉइंट ई, इसको हम पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम कहते हैं, which Yes, sir. fixes, which determines the equilibrium price, that is 70, that is 70, 70। ये बन गया हमारा 70। यहाँ डिमांड और सप्लाई बराबर है, so this is the point which is on both डिमांड करो एंड सप्लाई करो, ये पॉइंट जो है ये डिमांड करो पे भी है सप्लाई करो पे भी है, तो यहाँ 50 है फॉर एग्जांपल डिमांड एंड 50 is supply, 50 is demand and 50 is supply. This is point of equilibrium or equilibrium point. This is equilibrium point. So equilibrium point is that point at which demand curve and supply curve intersect each other. That point at which Yes, sir. demand curve and supply curve intersect each other and determine the equilibrium price in the perfect market. That point is called the point of equilibrium. Point of Equilibrium. equilibrium. तो हम simply हम यहाँ लिख सकते हैं from the above table and diagram, for example, when price is 50, the quantity demand is 70 and quantity supply is 30, there is Yes. more demand than supply or extra demand than supply, which puts pressure on the price and prices rise from 50 to 60. Again at 60 rupees 60, the quantity demand is little more than quantity supply and prices again increase because new firms in the enter Yes, into sir. the market, Market. which increases supply. When price is 70, both quantity demand and quantity supply are equal. 50 equal 70 is the equilibrium price or price price. in the perfect market. Price fixed in the perfect market. At this price, the market forces, demand force and supply force are equal. If price Equal. again rises to from 70 to 80, the supply is 60 and demand is 40. That means That is supply is overproduction. more than demand and there is overproduction in the market. There is overproduction in the market. To sell that overproduction, the firms have or market has to decrease the price, and price again and again comes to rupees 70, which becomes the perfect Equilibrium market price. Perfect market price. This is price. how price is fixed in the perfect market or perfect competition. और कुछ कल मैं आपको पढ़ाऊंगा व्हाट इज इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये लिखेंगे हम, व्हाट इज इक्विलिब्रियम प्राइस एंड व्हाट इज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तीन चीजें हमें आ गई। इक्विलिब्रियम Yes, पॉइंट sir. क्या है, व्हाट इज इक्विलिब्रियम पॉइंट, व्हाट इज इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस and what is equilibrium quantity. Equilibrium Yes, quantity. sir. Equilibrium quantity is that quantity which is bought and sold in the perfect market At point of equilibrium.